I can't judge anything for myself. मैं अपना काम कर रही हूँ. My work will stand for what it is, and it will speak for itself. He's a very good actor and a very confident actor. He's a wonderful person to work with, very easy to be with, very compatible and extremely encouraging. I'm not expecting anything. I know that I've given my 100%. Every person on the unit of Rehna Tere Dil Mein gave the film 100%. What happens with the film is up to destiny and up to God. जी आप ब्यूटी क्राउन्स के साथ आने वाली मॉडल्स का Hi, Ma. एक्टिंग में ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इनकरेजिंग नहीं होता, तो व्हाट यू सी, आप क्या स्कोप देखते हो इसमें अपने लिए? I can't judge anything for myself. मैं अपना काम कर रही हूँ. My work will stand for what it is, and it will speak for itself. क्राउन का किताब जीतना वो कुछ और था, ये कुछ और है, and आप लोग डिसाइड करोगे पिक्चर देखकर. टेल अस समथिंग अबाउट द फिल्म. The film. Okay. Rehna Tere Dil Mein is about love, honesty, hate, and trust. It is that fine line between love and hate. How you can love someone, and how a little action of that person can make you hate the person, and how you can hate someone, and a little something that they do can make you love the person. इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए. I'm playing a very strong, independent, sensitive, self-assertive girl who is living in another city. She's working for a multinational company. She falls in love, and from then on, how her life changes. टेल अस समथिंग अबाउट द म्यूजिक. The music is absolutely alive, very bubbly, very youthful. The picturization is fantastic. It has a lot of new rhythm to it. And I personally love 2 songs in the film, 3 actually. Sach Keh Raha Hai, which is extremely sensitive song. It builds great emotions in your mind. It really tears you apart. If you watch the song, you feel like crying. Zara Zara, which is a very sensuous song, but very aesthetically shot. And Dil Ko, which is also very melodious love song, which is very sweet. आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इस फिल्म में? अभी बताया हमने, सच कह रहा है, जरा जरा एंड दिल को. दिया, माधवन ने भी आपके साथ इस फिल्म में डेब्यू किया है, तो उनके साथ काम करके कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंसेस रहे उनके साथ काम करने के? बहुत मज़ा आया. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, सो एंड अ वेरी कॉन्फिडेंट एक्टर. तो उनके साथ काम करते हुए कभी मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है मुझे क्या हो रहा है. There were a lot of instances where he helped me out with my work. There were a few nuances which he pointed out, which helped me build my performance a lot more. He's a wonderful person to work with, very easy to be with, very compatible and extremely encouraging in every step. Through the film, he was very, very encouraging. फाशू जी के साथ काम करने के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? He's a great producer to have. I think he's one of the best we have in the country in terms of publicity and promotion of the film. He's very strong-willed. He's an extremely assertive person. Once he gets his heart fixed on something, he makes sure it happens. I think all the movies that we're shooting will see the light of the day only thanks to him, because he's there as a strong force and an energy. He pushes the whole movie forward and he makes things happen. He's a very good producer. दिया, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी अपनी, ये उनकी पहली हिंदी मूवी है, तो उनके साथ भी काम करके कुछ मतलब कैसा लगा आपको? क्या एक्सपीरियंसेस रहे? ऑफ कोर्स उनकी हिंदी पहली फिल्म है. गौतम ये फिल्म तमिल में बना चुके थे, मिन्नले, तो उनकी क्लैरिटी बहुत थी ये फिल्म में. ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग. एज अ डायरेक्टर ही वाज वेरी क्लियर इन हिज विजन. ही ऑल्सो हैड हिज कैरेक्टर्स कम्प्लीटली एच्ड आउट एंड क्लियर इन हिज माइंड. तो कहीं किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं था. सो अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ क्लैरिटी इन थॉट, नो कन्फ्यूजन, सो द एटमॉस्फेयर वाज ग्रेट. एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फिल्म से? Expectations reduce joy. I'm not expecting anything. I know that I've given my 100%. Every person on the unit of Rehna Tere Dil Mein gave the film 100%. What happens with the film is up to destiny and up to God.